Hello my dear students, आमे chapter 1 तो पढ़ी सारचु। आजिर सेशन रे आमे क्विक समरी गोटे करिबा आउ PYQ क्वेश्चंस देखिया को जाउचु। ऑल्सो आमे PYQ एरियाज जहाद्रु सब क्वेश्चंस पढ़िबो सेगुडा भी देखिया को जाउचु। सो स्टिक अंटिल द एंड, आमे बहुत सारे इंपोर्टेंट PYQs डिस्कस करिया को जाउचु। लिविंग ऑर्गेनिजम्स रो जदि हमें कैरेक्टरिस्टिक्स देखिबा मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, कॉन्शियसनेस जदि चारटा चॉइस पड़िबो तो हमर व्हिच वन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक और द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो एठी मने रखिबो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर characterized by metabolism. Why growth हबनी? growth कहीं ना नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स रे भी हमको फिजिकल स्वेलिंग और ग्रोथ देखिया को मिले। रिप्रोडक्शन कहीं हबनी? बिकॉज सर्टेन एनिमल्स सच एज mules, in them reproduction is not found, so reproduction is not universal. Consciousness कहीं हबनी? कहीं ना consciousness is just response to stimuli. So the most important defining characteristic for the living organism is metabolism. Okay, now cellular organization is a characteristic of life. Okay, এটা another important line. Next हमें देखिबा what is taxonomy. Taxonomy तमे जानिचो, it is identification, nomenclature और classification. Systematics कौन? Systematics है taxonomy रे जदि हमें evolutionary relationship add कर परिबा. Then who is known as the father of taxonomy? Carolus Linnaeus, very important. Our biological species concept, it was given by Ernst Mayr. एटा तुम्हारे NCERT book रे beginning रे दिया है जी. तो ए point टा भी इटी important. Okay. जदि तुमको पचरा जीव what is the basic unit of classification, answer कौन हबो? Species. Okay, the level in which organisms share maximum similarities again is species. Now individuals in this level are capable of interbreeding, which is not found in any other taxonomic level. Okay, एबे binomial nomenclature को देखि देबा। binomial nomenclature ता की इंट्रोड्यूस करथिले? Carolus Linnaeus. Okay, कौन तार rules quickly देखि दबा। फर्स्ट वर्ड टा genus, सेकंड वर्ड टा specific epithet. genus ता सबु बेले कादरे स्टार्ट हुए? कैपिटल लेटर रे। आउ सबु किछि स्मॉल लेटर रे थाए। species भी किंतु तमर कौन हुए? स्टार्ट करे स्मॉल लेटर रे। वेरी इंपोर्टेंट। प्रिंटेड नेम्स गुडा इटैलिक्स रे हबो, हैंड रिटन नेम्स गुडा कौन हबो? अंडरलाइन सेपरेटली। आउ हमर साइंटिफिक नेम टा सबु बेले लैटिन रे ही हबो। ओके, ए स्लाइड रे देखो, वेरी इंपोर्टेंट स्लाइड। एथिरे हमको फर्स्ट टैक्सोनॉमिक हायरार्की रे ऑर्डर ऑफ द लेवल्स टाको मने रखिया को पड़िबो। तमे जानिचो प्रत्येक टी लेवल को मैं कोन को टैक्सोन को, ताहले तार ऑर्डर टा कोन? जदि हम इंक्रीजिंग ऑर्डर रे जीबा, स्पीसीज, मेनी स्पीसीज मेक जीनस, मेनी जीनस मेक फैमिली, मेनी फैमिली मेक ऑर्डर, many orders make class, many classes make phylum in case of animals, and division in case of the plants. Okay, many phylums or divisions they make the kingdom. Now जदि तुमको पचरा जीवा lowest category टा कोना? आंसर हो species. और highest category तमरा kingdom, right? आउ एटा तमरा गोटे concept taxonomic hierarchy रे बहुत important कि जदि हमें upwards जीवा species रो kingdom पर्यंत similarity टा decrease करिवो, किंतु number of organism टा increase करिवो। ओके, आ जदि diversity देखिबा, variation देखिबा, that will also increase as we go upward. Okay, ए scientific names गुडा बहुत important, repeatedly ask हुए। देखो, human रो homo sapien, mango रो mangifera indica, lion रो panthera leo, potato रो solanum tuberosum, housefly रो कोन? musca domestica. Okay, आउ गोटे छोटो माने टॉपिक टे अछि टैक्सोनॉमिक एड्स। टैक्सोनॉमिक एड्स माने हला जो जिंस गुडा हमको टैक्सोनॉमी रे स्टडी पई हेल्प करे। बहुत टाइम इधर भी क्वेश्चन आसे, स्पेशली की रु आसे। ओके, किंतु हमें सब गुडा को रिवाइज कर दबा। हार्बेरियम ता कोन? तमरो ड्राइड प्लांट स्पेसिमेंस गुडा को हार्बेरियम कहू हमें। ओके, किंतु तमरो लिविंग प्लांट्स जदि थिबो सेगुडा हमर बोटानिकल गार्डन रे थाए। तमे बहुत सारा बोटानिकल गार्डन विजिट भी करिथिबो। सिमिलरली जदि लिविंग एनिमल्स हमें देखिबा सेटा हमर जूलॉजिकल पार्क रे थाए। ओके, जदि प्रिजर्व्ड एनिमल्स देखिबा ता माने कोन? जेमति कि किछि स्नेक स्पेसिमेन किंबा डायनासोर बोन, एगुडा हमें सब म्यूजियम रे देखि परिबा। राइट, तम म्यूजियम विजिट करतला बेले एगुडा देखिथिबो निश्चिंत। राइट, तापरे तमरो कोन? की जदि हमें देखिबा,
key is a very important taxonomic aid which is used in identification. Very important, not in characterization. It is used in identification. Like how it is used in identification? Taxonomic key is used contrasting characters. Mane तमर लिस्ट थिबा contrasting characters रो जदी माने गोटे क्वेश्चनर भेलिया थिबा क्वेश्चन आसीबो कि is it a monocot or a dicot तो monocot रो गोटे स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक देथिबो तमको टिक मार्क करिया को पड़िबो that is known as key. Yes or no? On the basis of that what will we do? We will identify the species. Okay, next point hela flora. Flora कोन? Plants of any area are known as flora. सेमिति fauna जदि पचरा जीवा animals of an area are known as fauna. Okay, एबे नेक्स्ट हला मैनुअल. मैनुअल टा कोन? कोनोसी जिंसटा को तमरा आइडेंटिफाई करिया पे जो गाइड टा that guide or identification guide is known as manual. Very important again. Okay, मने रहला ना कीटा हला तमरो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स रो बेसिस रे आइडेंटिफिकेशन करिया पे हेल्प करे आ जो गाइड टा हमें यूज करू सेटा हला तमरो मैनुअल. ओके, जदि आमे गोटे टैक्सन को पूरे डिटेल रे स्टडी करिवा दैट इज नोन एज मोनोग्राफ. माने खाली स्पीसीज स्टडी कलो नहले खाली जीनस स्टडी कलो इन डिटेल दैट इज नोन एज तमरो मोनोग्राफ. ओके, एबे ए जो टेबल टा में डिस्कस करथिलु सेटा भी बहुत इंपोर्टेंट. मु आउ थरे एटी डिस्कस करूनी तो ए पॉइंट्स गुडा को तुमे कवर कर दबो. तापरे एबे देखिबा हमें सम इंपोर्टेंट एरियाज कोठी सब क्वेश्चन आस्तिला. देखो रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्वेश्चन आसीची, यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर, टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्लासिफिकेशन नीट 2016 रे आसी, फाइलम इक्विवेलेंट इन प्लांट्स हमें जानछुटे डिवीजन एटा नीट 2018 रे पचारचंदी, नीट 2019 रे पचारचंदी साइंटिफिक नेम्स और टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज रु. नीट 2020 रे देखो टैक्सोनॉमिक की मुबे कहितली तादर क्वेश्चन आसी. 22 रे आसी अगेन टैक्सोनॉमिक हायरार्की रु. 23 रे साइंटिफिक नेम्स और नोमेनक्लेचर रु. रीनीट जो हितला इधरे जीनस हायरार्की फैमिली ऑर्डर क्लास मैचिंग रु आसीची, नोमेनक्लेचर रूल्स रो आसी. तो एगुडा सबरु क्वेश्चन ऑलरेडी आसी सरची. एबे हमें देखिबा कोन कोन इंपोर्टेंट एरिया कहा को बेसी फोकस करिबा. देखो जदि वेरी हाई टॉपिक देखिबा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर रूल्स टैक्सोनॉमिक हायरार्की टा वेरी इंपोर्टेंट. नेक्स्ट तापर लेवल देखिबा जदि टैक्सोनॉमिक कैटेगरी टैक्सोनॉमिक एड्स टा इंपोर्टेंट, स्पीसीज कांसेप्ट भी वेरी इंपोर्टेंट. मॉडरेट एरियाज हला तमरो लिविंग रो कैरेक्टरिस्टिक्स, टैक्सोनॉमिक वर्सेस सिस्टमैटिक्स, साइंटिफिक नेम्स एगुडा सब मॉडरेट एरियाज. ओके, टाइम इज जाइची सबटू इंपोर्टेंट पार्ट सेटा हला प्रैक्टिस एमसीक्यूज. ओके, क्वेश्चन 1 को देखि दबा. Which one is the defining feature of the living organisms? First रे कहितली growth, reproduction, consciousness, metabolism. आंसर कोन हबो? आंसर हबो तमरो मेटाबॉलिज्म. ओके, why metabolism? growth ता नॉन लिविंग रे भी देखा जाय, reproduction is not universal, consciousness ता तुमरो गोटे response to stimuli, so metabolism will be the answer. तापरे करेक्ट साइंटिफिक नेम इज एटी बहुत सारा ऑप्शन देखाई जे हमें देखिबा कहा दरे ओनली जेनस रो कैपिटल लेटर थिबा रेस्ट ऑल स्मॉल. ओके, ऑप्शन बी रे सेमती अछि, सो ऑप्शन बी विल बी द आंसर. ओके, नेक्स्ट हला व्हिच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी हैज मैक्सिमम सिमिलरिटीज. हमें ऑलरेडी जानी छे एटा स्पीसीज हबो काइने स्पीसीज रे सबटू बेसी सिमिलरिटी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा इन एनिमल्स फाइलम कॉरेस्पोंड्स टू. फाइलम टा एनिमल्स रे कोन थाए? डिवीजन थाए कहिची, तो एटा हबो आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा टैक्सोनॉमीज की is mainly used for. देखो नीट 2020 रे आस्तिला चारटा ऑप्शन अछि, मु ऑलरेडी कहिची सेटा आइडेंटिफिकेशन रे यूज हुए आउ कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऊपरे बेस्ड थाए. ओके, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ऊपरे बेस्ड थाए. ओके, नेक्स्ट हला the smallest taxonomic categories is very easy, lowest category species. Okay, question next देखिबा which statement is incorrect. Okay, correct की incorrect देखि दउतबो. biological names are latinized, it correct. species name begins with capital letter, eta incorrect because it begins with small letter. Okay,
Printed scientific names are italicized, eta correct. Genus begins with capital letter, eta correct. Okay, next question देखिबा. Which scientist proposed binomial nomenclature? Very easy. तुम्हारा आंसर कौन होगा? Carolus Linnaeus. So answer will be C. तापरे नेक्स्ट है which organism cannot be used to define reproduction? इधर देखो म्यूल टा रिप्रोड्यूस करी पारे ना, that's why it will be used to define reproduction. Next question है systematics differs from taxonomy because it includes identification, classification, evolutionary relation, naming. हमें जानी चु systematics माने है taxonomy plus evolution. So answer है option C. Next question देखिबा. Which taxonomic aid provides identification through contrasting characters? हमें जानिचे एटा हला key. Okay, already discuss करथिली. Specific epithet of Panthera leo is. Second word ta answer habo leo. Panthera ta हला genus, leo ta हला specific epithet. Okay, next, which is not included in taxonomy? Identification, nomenclature, classification. Answer है D because evolutionary relationship ta use हुए ना, सेटा systematics रे use हुए. एबे assertion reasoning देखी दवा. Assertion है metabolism is a defining feature of living organisms. All living organisms possess metabolic reactions. Both assertion and reasoning are correct, so answer will be A. Next question देखी दबा. Species is the basic unit of classification. Members of a species share maximum similarities. Again, answer both assertion and reasoning are correct, so answer will be A. Next देखी बा. Taxonomic keys help in identification. Keys are based on contrasting characters. Correct. Taxonomic keys ta हमारा identification ने help करे. Assertion टा correct. Reason टा देखिबा keys are based on contrasting character. एटा भी correct. कौन reason टा correct to assertion? Yes, because keys are based on contrasting characters, it can help in identification. So both assertion and reasoning are correct. So answer will be A. एबे हमें देखि दबा match the following type of question. Okay, देखो species टा हमें जदि देखिबा species टा कौन तमरा lowest category. Okay, genus जदि हमें देखिबा it is related species. Family जदि हमें देखिबा family is related genera. Okay, order जदि देखिबा it is related family, right? Next question देखिबा एटा scientific names ऊपर based अछि. Mango रो scientific name कौन? Mangifera indica. Lion रो तमरा कौन? Panthera leo. Potato रो Solanum tuberosum. Human रो Homo sapien. Okay, family रो गोटे example रे अछि तमरो Solanum tuberosum मु कहितिली. ता ऊपर question टा अछि. Species जदि देखिबा Solanum tuberosum, so species of tuberosum. Genus हबो कौन? Solanum. Okay, तापरे तमरा order जदि थिबा order सबले ales लगे तो Solanales. Family Solanaceae. Okay, एबे एटा तमरा taxonomic aid ऊपरे match the following टा अछि. Herbarium. Herbarium मु कहितली कौन? Preserved plants. तो dried plants सब herbarium रे इटा हबो. Museum रे सेमती कौन? तमरा preserved animals. Okay, zoo टा हैला तमरा live कौन? Animals. आउ botanical garden टा तमरा live plants. Okay, sorry गला ए match the following टा एमिति प्रकार आसी परिबो, but data would be the same. जो आगे हमें जो important points गुडा discuss कले तारी ऊपर based करके सबु question आसीबो. तो आशा करूछु मु आजी हमें जहाँ भी सबू PYQ liners areas आउ जहाँ भी MCQ सबू डिस्कस कलु तमानको सबू बहुत बढ़िया भाବରେ सबू बुझी आसिला. आउ if you enjoyed the class today, got something out of it, please hit the like button, subscribe to the channel, share with your friends. नहले channel जदि के subscribe न करिवे तले बढ़िबो केमिति. So guys, please subscribe, share with your friends, don't keep it to yourself. Okay, मते भी सेटा motivating लागिबो. ओके, तो नेक्स्ट क्लास रे हमें कौन पढ़िबा? देखो नेक्स्ट क्लास रे हमें सेकेंड चैप्टर टा तो पढ़िबा ही, ता सहित मु कौन भाबीचे सबु किंगडम गोडा एका संगे रे पढ़ियाटा टिके बोरिंग हे जिवो. तो मु कौन करिबी ना बेसिक खाली हिस्टोरिकल क्लासिफिकेशन तमरो करई देकी तापरे प्रत्येक किंगडम संगे रे आमे
ତମର ସେଲ୍ ର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନେଲ କୁ ବି କରିଦଉଥିବା ତ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ବି ବୋରିଂ ଆଉ ଆମର ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ କିଙ୍ଗଡମ ଯେମିତି ସରୁଥିବ ଆମର ତା ସହିତ ତମର ସେଲ୍ ର ଚାପ୍ଟର ବି ସରି ଯାଇଥିବ ତ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଆଉ ମୋନୋଟୋନସ୍ ହବନି ନହେଲେ କଣ ବହୁତ ମେମୋରି वाला चैप्टर टा तमर चैप्टर 2 तो चैप्टर 2 टा एका संगे पढ़ला बेलू टिके बोरिंग हबो तमे चैप्टर 2 सहित सेल टा को भी पढ़िबा तो यू कैन easily correlate and remember it nicely. Okay, thank you everyone, have a very good day, see you in your next class.